Yes, sir. Positive charge should move from high potential to low potential. Negative Right. charge from low Positive potential charge will move from high potential to low potential. Negative charge will move from low low potential to high. potential to high potential. Correct. Okay. Then an electron is accelerated by applying an electron would find its kinetic energy and potential energy. Also find the speed of electron. So work done is equal to kinetic energy. By using the work energy theorem, we can find out W is equal to Q into V. So this is kinetic energy or potential energy or both. How can we be sure? Like it's Sir, asking. Yes, beta. sir, where is DPP 7? You have sent DPP 8, 9, and 10. I'm unable to find 7. Yes, sir, same here. अच्छा 7 नहीं हुई. Yes, sir. 8, 9 किए sir. Okay, चलो फिर 8 कर लेते हैं. I think probably would have this 8 कर लेते हैं because I actually okay. Question number DPP number 8 open कर लेते हैं अभी फिलहाल. I'll send you 7 also for your practice. DPP number 8, 9, 8, 9, 10. Okay, 7 is not there. ठीक है. DPP number 8. DPP 7 is not here. DPP number 8. Let's begin with DPP number 8. Aman. Yes, sir. Okay. Try DPPs on your own or no? Sir, इस हफ्ते नहीं कर पाया, अगले हफ्ते से करूँगा. अच्छा. DPP number 8. Question number 1 is says that to know difference in potential between 2 point V use V is equal to minus E dot dl. In many cases, E as a function of position is not known, like in the case of multiple charges. E is difficult to calculate, then how potential can be determined? Yes. So थोड़ा conceptual questions we will discuss these questions more just to check your understanding. क्या होना चाहिए अगर हम इंटीग्रेट करके नहीं कर पाएंगे तो what should be the other way around? What should be the other possible way to find the potential? Anyone? Riddhi, what should be the other way? In a system of multiple charges, what is the way to find potential? Principle of superposition. Calculate due to individual charges and then add. Right? Yes, sir. Second question. DPP number 8, second question. A conducting sphere carries a charge Q. Second identical sphere is neutral. Initially, both spheres are isolated and then they are put in contact. What is their potential when they are put in contact? So this is like that case when we get two spheres touched together or connected together by wire. So since these two are identical, these are identical spheres. Yes, sir. So identical में तो कोई पंगा ही नहीं, charges will be equally divided half and half. And in the case of potential, that is KQ by R. So radius अगर हम इसकी R देते हैं, then the common potential of each will be KQ by 2 divided by R.
Second part is how do you account for the charge flow from first sphere to second sphere, because it was at higher potential. The sphere was at higher potential, charge flows from high potential to low potential. Right? Yes, sir. Okay. Second is how do you account for if sphere do not have same radius, then we have done in the class. This is divided in the ratio of the radii. Show that when conductor is charged, surface charge density is higher at point at it. So this is done in the notes. Question number third. 2-point charges 3 and -2 are placed 5 centimeter above the x-axis. At what point on x-axis electric field is 0? Electric field will be 0 on which side? There are two charges. One is positive, other is negative. If one charge is positive, other is negative, then Outside. Outside. outside closer to the smaller charge. So here this is 3.4 microcoulomb. Another one is -2. Closer to the -2 one. Closer to the -2 on that side, we will take a point. Electric field 0. Potential will be 0 on which side? Potential will be 0 at 2 points. One point will be in between, another point will be on the side of -2 microcoulomb charge. Positive charge electric field is away, negative charge is towards. At this point, P suppose net electric field is 0, then E1 should be equal to E2. Potential 0 करने के लिए there are 2 points, one is outside, another is inside. We did this cases because potential is just a number, so we have to use just the magnitude. There will be two possible cases where potential can be 0. Electric potential to positive and negative can be equal. If someone is solving, please give me the answer, final answer. नहीं तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप घर पे कर लेना. Question number third के first part का आंसर है electric field is 0 at x equals to 16 centimeter. Second part का आंसर है there are two such points. X1 is 1.852 centimeter and x2 is 7.143 centimeter. Third option says that show what do you infer from these results? What do you infer from these results? That at any position, if electric field is 0, potential may be non-zero, and potential is 0, electric may be non-zero in general. We cannot correlate that electric field 0, then potential will be 0. There is no such relation. Okay. Question number 4, calculate the potential to positive charge, negative charge, and then subtract. I mean, then find the VB minus VA. Question number 4, find the potential of A, potential of B, and then subtract VB minus VA. A का potential is KQ by B minus KQ divided by D minus B. सर D plus B नहीं होगा? अच्छा.
हेलो। यस सर। हाँ किसी का कॉल आ गया। यस, सॉरी सॉरी फॉर दैट। या ओके, VB is KQ by B minus KQ by D minus B। सो हम ऐसे B का पोटेंशियल निकाल के सबट्रैक्ट कर लेंगे तो इजी वाले क्वेश्चन तैयार क्यों कर रहे हो। B में आएगा Q की वजह से KQ अपॉन D minus B, KQ अपॉन D minus B एंड माइनस KQ by B, माइनस KQ by B। राइट, क्वेश्चन नंबर दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a thin circular ring of radius r has charge q by 2 distributed uniformly on top of a minus q by 2 on the bottom half। रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला था kq by r where q is the total charge। so अगर ये अपर हाफ में पॉजिटिव और लोअर हाफ में नेगेटिव है, दैट मींस टोटल चार्ज इज जीरो। if total charge is zero then potential on the entire axis will be zero। potential at the center is zero, potential on the plus q by 2 and minus q by 2, so that means total charge is zero, total charge is zero, then potential will be zero। सर एक सेकंड, फोर्थ दिखाना क्वेश्चन 4। हाँ, फोर्थ में दो दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 6, First option, sir. क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन 6, Yes, sir. Question number 6, first option. 6 फर्स्ट ऑप्शन, राइट। 6 इज इजी। हम दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे एंड देन वर्क डन मूविंग इज q into delta v। वर्क डन मूविंग इज q into from a to b, sorry from b to a। so b से a तक जाना है, will be va minus vb। a पे पोटेंशियल निकालेंगे by these two charges, b पे पोटेंशियल निकालेंगे। Question number 7, the radius of a soap bubble whose potential is 16 volt is doubled। The 8 new volt. तो ये हमें सिर्फ रेडियस डबल की, चार्ज तो डबल होगा नहीं, so it will cover। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें n number of drops coalesce together to make one drop। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे। Each having a charge of q and radius small r coalesces to form one big drop। Question number 8, identical charges are placed at the corner of cube of side B। Electrical potential energy of the charge plus q which is placed at the center of the cube। क्यूब के सेंटर पर हमने चार्ज रखा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वी फाइंड आउट potential due to all the charge exactly at the center। Potential due to all the charge at that center, and then using that we can find out the potential energy। U is equal to Q into V। 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by root 3 A by 2। This distance will be half of the body diagonal for each charge। Answer for question number 8 is B। It is negative charges are placed, so each energy potential will be negative। There are minus q and minus q placed। Right, question number 9, the charge given to hollow sphere of radius is this at a distance 4 centimeter from the center selected potential। Question number First 9, option. 28.8. yeah, radius is 10 centimeter, but हम 4 centimeter पे निकाल रहे हैं, means we are finding at any point inside, potential at any point is same as potential on the surface।
Question number 10, again simple, potential due to electric dipole. Potential due to dipole, we did formula for, I think, in the last to last class only. Potential due to dipole is Kp cos theta by r square. So distance is 1.28. What will be the potential due to this dipole? A distance of 12 angstrom on the axis. राइट, तो चार्ज हमें पता है, चार्ज कैसे पता है? ये H प्लस आयन और ये क्लोरीन माइनस आयन है, दोनों इस पे चार्ज प्लस ई के इक्वल, इस पे प्लस ई के इक्वल, बीच की डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से आ जाएगा E इंटू एल. A distance of 4 centimeter from its center, the electric potential. So K P हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है, E इंटू एल, थीटा is 0 डिवाइड बाय r स्क्वायर, r is 4 centi, r is 12 angstrom. Right? Okay, इसको solve करना आगे. E is 1.6 10 to the power minus 19 and L is the bond length which is given. Okay, 10th answer is A. 11th answer is 11. Doubt किसी को? 11th question number 11. Doubt किसी को? Yes, boss. Question number 11. Solve करो अभी. Calculate a ring. Consider a ring of radius r with charge की uniformly distributed over its perimeter. Yes. क्या आएगा आंसर? First 11th answer is A. KQ by R and at the center and KQ by root R square plus X square. Question number 12 is a charge rod of length L and uniform charge LC lambda is bent to form a semicircle. Potential at the center of semicircle. कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी रिंग का ही फॉर्म है और रिंग में हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम. सो Yes, sir. Fourth option. calculate the total charge and potential will be KQ by R.
क्या आएगा आंसर? Q is lambda into pi r divided by r. R gone. K pi lambda. Question number 13. Electric potential point P on the axis of charged disk with a hole. Very nice. Charged disk with a hole. ये थोड़ा खतरनाक है. Charged disk with a hole and inner radius of A, outer radius is B, and charge density is 6. कैसे करेंगे इसमें? Anyone? Any idea? How can we find this potential due to this disk? There is a cavity or there is a hole inside. How do we solve this? कैविटी क्वेश्चन कैसे करते थे हम? पहले पूरे में पॉजिटिव एज्यूम कर लेंगे, या फिर हम इसको पूरे में पॉजिटिव और अंदर में नेगेटिव, या फिर हम इसको एक रिंग लेके एंड देन वी कैन इंटीग्रेट. We can consider a ring of radius r and thickness dr. So radius r and thickness dr. Having charge dq, तो इस छोटे से पोर्शन पे हमने चार्ज दे दिया dq. Electric potential due to this ring is k dq divided by root of r square plus x square. And then we integrate on the value of r, from dq हो जाएगा sigma into 2 pi r dr divided by root of r square plus x square, limit from a to b. Yes, what will be the answer? What will be the answer? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो समझ आ रहा है ना? हमने ऐसा डिराइव किया था, सेम मेथड है. यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी. ये 2 pi से this becomes 2, so sigma by 2 epsilon naught
integration of r dr divided by root of r square plus x square. फिर r square plus x square को t square लेके and then we can integrate. Answer for 13 will come out D option. So ये वाला एक बार फिर से सुनना दो. नहीं ये डिस्क है जिसमें अंदर थोड़ा होलो था. Inner radius is B, outer radius is A. Inner radius is A, outer radius. डिस्क कैसे बनाते हैं? छोटे छोटे रिंग्स को ज्वाइन करके. कंसीडर जनरल रिंग, रेडियस R, radius R. तो छोटी सी रिंग का पोटेंशियल आ जाएगा k क्यूब बाय रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. q की जगह पर dq लिख लेंगे बिकॉज़ वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट. स्मॉल r इसकी रेडियस है. This comes out for a 1 point charge. And this may be charged one ring of charge. ऐसे सारे रिंग के लिए हम इंटीग्रेट कर लेते हैं starting from A to B. बाकी सेम स्टेप्स सही है. पहले इसके आगे का इंटीग्रेशन करने के लिए हम r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को t स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं. r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कंसीडर इट एज t स्क्वायर. 2r dr is 2t dt. So sigma by 2 epsilon naught. और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t लिमिट फ्रॉम a to b. t is root r square plus a square plus r square plus x square. So रूट में क्या लिखा आपने? मतलब वही है स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल b स्क्वायर. इसमें लिमिट लगा लेंगे r is equal to a to r is equal to b. t की वैल्यू डाल दें. t क्या था? t is root r square plus x square. ऐसे. Right. Next. आंसर 13 का आ जाएगा d. Question number 40. Question. A non-gradient of radius a uniform positive charge resistance image placed on the ground with the vertical axis.
छोटे में क्या करेंगे, एच हाइट से सरफेस तक लेके आना, फ्रॉम द एच हाइट टू जस्ट ओवर द सरफेस। Loss in electric potential energy is equal to, sorry, loss in Gaussian potential energy will be equal to gain potential energy. K से B तक आ जाता है, mgh will be equal to q I'm writing on laptop, my handwriting is very master. Q into V A minus B. Calculate potential at A is B. B minus B is the formula में अभी डिराइव किया था उसको इसको कहते हैं कौन सा पोटेंशियल का फॉर्मूला जब पीछे फॉर्मूला क्या था उसके बाद एक पोटेंशियल निकाल सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एम रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर root of h square plus h square minus root of h square plus b square. B is 0, a is the radius of upper half, bigger half, and b is 0 is the radius of lower half. Potential in the center, को solve करके हमें calculate करना है. Loss in Gaussian potential energy will be equal to increase in electric potential energy. इसको solve करिए क्या?
Yes. So loss in gravitational potential energy will be equal to increase in its electric potential energy. MGH will be Q times VB. B is the center और सेंटर में इसका पोटेंशियल आएगा, that potential will be and potential will be sigma by 2 epsilon naught. Sigma A S को 0 पुट कर दोगे तो सेंटर पे आ जाएगा. This is at the center and this is at height h. इसमें ऐसा है कि कितनी हाइट से इसको ड्रॉप करने की वो जस्ट सेंटर में पहुंच जाए. Substitute this MGH is equal to Q sigma by 2 epsilon naught root of sigma by 2 epsilon naught 1 minus this whole quantity. Sigma by 2 epsilon आ जाएगा A minus of root h square plus a square और ये minus minus का plus. And it is given that Q by M is 4 epsilon naught G by sigma. 4 epsilon naught G by sigma. बेटा किसी का आंसर आया क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है. H is Q sigma by 2 epsilon naught mg into A minus root of h square plus a square plus h. Q sigma by 2 epsilon naught m into G. So ये सारा आ गया 2 के equal from the information given. Right. इसको हम solve करके और फिर वैल्यू निकालेंगे. So when you solve this equation, h by 2 is equal to a minus root a square plus h square plus h. तो आ जाएगा root of a square plus h square. So a plus h by 2, then do the whole square and solve for value of h. ये कभी सब्जेक्टिव वाले जे का क्वेश्चन है. A square plus h square that become a plus h by 2 whole square. What is the answer for h? What is the answer for h from here? यार कोई तो बोलो. A square plus h square 4 plus h. A square gone. 3 by 4 h square is equal to ah. H is equal to
4/3 है। करेक्ट, ये इसका आंसर हो गया 4/3 है। थोड़ा सा एनर्जी की इक्वेशन थी इसमें अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. It says a conducting bubble of radius A, thickness T, has potential V. As potential V, now the bubble collapses into a droplet. Find the potential of the droplet. Question number 15. Yes, I was talking about this type of question. तो एक ड्रॉपलेट थी पहले, अब वो एक बबल में कोलैप्स हो गए. व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल? सो इन दैट केस व्हाट वुड रिमेन सेम, मास रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम. Conducting bubble of radius A and thickness T. Right, so this has a charge q. इसका potential अगर v है तो v is equal to k q by a. Now it says that the bubble collapsed into a droplet. This bubble collapsed into a drop. So charge तो same ही आएगा, इसके radius हो गए r. This is question number 15 from DPP 8. अब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पहले होगा 4 pi r square into thickness t. And now it become 4 pi by 3 capital R cube if R is the radius of this bubble form. So the new potential of this drop will be K Q by capital R. First option, sir. Which option? First option. First option, right. Question 15 option is A. R की वैल्यू हम निकाल लेंगे in terms of A, so R cube is A square T. R become A square T to the power 1 by 3. Yes, answer is A. 15 answer is A. Question number 16. Question number 16 answer is किसी ने 16. Question number 16 answer is A and B. This is one more than one or more than correct answer. 16 says 33 microcoulomb charge is placed at 36 centimeter from an identical charge. So point is moved from A to B. You have to find the change in potential energy. So first is correct. Yes, the formula here. Potential energy at any point will be charged into potential of that point. की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1.5 हो जाएगा. वर्क डन इन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट. Sir, यस,
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसिंग, यहाँ पे पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन लेके सॉल्व करना है ना। पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एरिया। तो उससे नहीं आ रहा बी आंसर। क्यों बी से इधर आने में पॉजिटिव आ जाएगा ना, +1.5। work done is equal to increase work done against the external work done by external force is equal to increase in potential energy. Increase in potential energy is +1.5. यहाँ पे माइनस लिखा है इसलिए गलत है। माइनस लिखा है इसलिए गलत है। A is correct, B is correct. C में माइनस लिखा प्लस होता तो सही होता। यस सर। Question number 18. It is three charges are at the corners of equilateral triangle. A, B, C are midpoints of the sides. Mark the correct option. Calculate potential at point A, point B, point C, and then total energy of the system charge is greater than 0. Question number 18. Question number 18, A is correct. Question number 18, A is correct. Find the potential at point A. A का potential कैसे निकालेंगे? This is an equilateral triangle of side length is L. Because of minus Q, it is minus KQ by L by 2. Because of minus CQ, K minus CQ by L by 2. और जो तीसरा चार्ज है वो इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये √3L/2 होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल लग नहीं रहा है, बट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इज √3L/2. So this length become plus KQ divided by √3L/2. Is it correct? यस सर। Okay, A is correct. What about B? Similarly, B और C का कैलकुलेट करो पोटेंशियल कितना है. Is B, A is correct, so A seems to be correct in 18. What about B and C? अमन हो रहे ना क्वेश्चंस? अमन यस सर, सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चंस आप? कर रहा हूँ सर। मैं थोड़ा पीछे हूँ। मैं अगले हफ्ते तक सारे करने की कोशिश करूँगा। मतलब Yes, B and C, anyone is correct? No. B is incorrect, C is correct. Vidit? Krish? B is correct, C is correct, or both correct? क्या हो गया? B करेक्ट है नहीं करेक्ट है? B is incorrect?
अरे यार कर ही नहीं रहेगा। बी का गलत है और सी का सही, अकॉर्डिंग टू द आंसर ए सी इज करेक्ट। बी में पोटेंशियल निकालोगे बाय सेम लॉजिक माइनस क्यू प्लस क्यू का 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 3q का, तो k इंटू 3q डिवाइडेड बाय √3 L/2। माइनस साइन नहीं है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज इट इज करेक्ट। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी k into plus q by L/2, k into minus 3q by L/2 and minus kq divided by √3 L/2। ऐश्वर्या total potential is greater than 0, no obviously it is greater than 0, सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, non-conducting sphere of radius r2 contains a concentric spherical cavity of radius r1। स्फीयर के अंदर कंसेंट्रिक कैविटी है। Potential at the outer surface is greatest. Potential is same for all points. Okay. Potential अंदर तो constant ही होगा। A is correct or not? How do you define? How do you find? इसके सरफेस से पोटेंशियल कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ऐसे हमारे पास क्या ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, so consider a small spherical surface, spherical shell having a radius r and thickness dq। इसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा कितना, ये स्मॉल r है। इसके लिए जो बाहर का सरफेस है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r2, it will be k into dq divided by r2। dq is rho into 4 pi r square dr divided by r2। r इसको इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम r1 to r2। नॉन कंडक्टिंग था ना शायद। हाँ, so k is 1 by 4 pi epsilon naught, rho constant है 4 pi, r2 constant। ऊपर का इंटीग्रेशन r का स्क्वायर, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा r cube by 3, so that become r2 cube minus r1 cube by 3। This is the total potential। राइट, तो ये r1 क्यूब तो कॉमन है, r से r2 बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है, r1 से r2 सरफेस से मैक्सिमम है, देन इट डिक्रीजेस। कैसे पता ये बढ़ता जा रहा है? तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप
This integration will be done from R1 to R. R वाला टर्म तो subtract में गया आगे आ जाएगा R. So when R is at the maximum value is R2, then electric field is maximum. So electric field is maximum at R is equal to R2. Potential is same at all points. Potential is same at all points between R1 and R2. Is it correct? No, potential is changing with R. Potential is changing with R. And potential inside the cavity has same value. Yes, inside cavity there is no electric field because it is concentric cavity. Therefore, electric field is 0. अगर ये cavity और कहीं पे होती तो electric field constant होती, 0 नहीं. Potential varies inversely. Potential varies inversely with R for all exterior points. V inversely proportional to 1 by R. बाहर किसी point के लिए when we go outside, that is inversely proportional to R. That's correct. बाहर किसी भी point के लिए हम सारा का सारा चार्ज substitute कर सकते हैं. So A is correct. B is wrong. C correct. D correct. Okay. Question number 20. 3 charges Q plus Q and बेटा 19 आ गया समझ में? Question number 19 is clear. C and D तो समझ में आ जाएगा. केवल A वाले part के लिए we need to integrate and then calculate. Right. Question number 20. 3 charges Q, capital Q, small q, Q are placed on the versus right angle triangle. Then the net electrostatic potential energy of system is 0 if it is equal to. 20 is correct. Calculate the net potential energy. Net potential energy will be the energy of these pairs. So these are 50 pairs. ये correct है? 20th statement is correct or not? लोगों ने किया नहीं है शायद. A root 2A. बट हम क्लास में सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे for very obvious and common sense reason. यस सर मैं अगले हफ्ते तक ट्राई करूँगा. मैं इस हफ्ते थोड़ा हॉलीडे होमवर्क प्लस क्लास वर्क कर रहा हूँ इसलिए. This should be equal to 0 और इसको 0 calculate put कर लेते हैं. Is it correct? Check, confirm anyone. 20 is correct or not? इसकी potential energy निकाली उस सिस्टम की, इसको 0 कर दिया and this is 0 when capital Q is equal to. Seem to be correct. ये आ जाएगा root 2 plus 1. So second term and third term if you add root 2 plus 1 K capital Q divided by root 2A is equal to minus KQ square by. Done? Right, second what is the potential energy of multiple charges given as this? Okay, fine. Formula is correct, so it is statement is correct, reason is correct, and it is the correct explanation also. 21. Conductors having equal charge and volume must also have equal surface potentials. 21 is correct. 1 is correct or not? Conductors having equal charge and equal volume must have equal surface potential. Is it correct? Yes sir. The same volume बोल रहा है, shape अगर अलग अलग हो जाएगा तो अलग हो जाएगा. For example, if it is sphere of volume V
और हम अपने वॉल्यूम का कोई क्यूब ले लें, मे बी कोन ले लें. Volume is same, charge is same. On the surface it will have same potential? No. Charge distribution is not same, potential difference will not be, potential will not be same. 21, is it same? No. Potential of charge conductor is total potential energy per unit charge. The statement 2 is correct, but 1 is false. So answer will be D. We have n for different point charges in space, then potential energy system can be calculated by summing all pairs. Now consider cube of side A and minus E. And charge 2 is at the center. Very nice. Potential energy of the charge pairs which are at distance A. A distance पे जो pairs होंगे वो कौन से वाले? Those are along the edge. So उनके लिए कितने edges होंगे? Total 12. 12 K की square by A. So first के लिए हो गया Q. First के लिए Q is only in one option. So B directly आप कर सकते हो. 23. The volume charge density of a sphere radius r0 is distributed as this potential at the surface. जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था r1 से r तक इंटीग्रेट करके, it is a ditto same question, only the function is different. The surface charge density, the volume charge density is a function of r. So हम एक छोटा सा r पे dr thickness का एक shell consider करेंगे, and for that shell we will first find out the potential at the surface. So surface था इसका r0 distance पे, total radius है इसकी r0. So if charge here is dq, then the potential will be dv is equal to k times dq by r0, और dq को हम लिखेंगे rho into 4 pi small r square dr divided by r0. Rho is rho naught 1 minus small r square by capital by r0 square. दो की वैल्यू रखो और इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक? इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to r0. Integrate this from 0 to r0. Calculate this answer. Question number 23. हमने पहले एक छोटा सा shell consider किया. Spherical shell. It will have a charge dq. Potential due to this dq on the surface, outer surface. So k dq divided by r. R is the distance of that surface. Now we need to integrate this from 0 to r0 to calculate the total potential on its surface. 23 किया किसी ने? Now you have to replace the value of rho in terms of the given. Anyone got the answer? 23. One by 4 pi epsilon naught. Rho is rho naught 1 minus small r square by r naught square into 4 pi r square dr divided by r naught. 4 pi gone. It becomes rho naught by r naught. अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो r square minus r to the power 4 by r naught square times dr and then integrate 0 to r naught, 0 to v on the surface. Yes, what's the answer finally? Quick. क्या आएगा आंसर k की वैल्यू? This? Yes, sir.
क्या आएगी वैल्यू? सॉल्व नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। रो नॉट बाई आर नॉट आर क्यूब बाई 3 माइनस आर 5 बाई 5 आर नॉट स्क्वायर फ्रॉम 0 to आर नॉट। 5 माइनस 3 2, सो 2 आ जाएगा ऊपर। 2 रो नॉट आर नॉट स्क्वायर अपॉन 15 एप्सिलॉन। So k value is 2. 23 में k की वैल्यू 2 हो जाएगी। 24. Two equal charges are located as shown. Graph of function Vx divided by kq by a versus x by a has the maximum of p. Find the value of p when Vx is potential along x-axis. Very nice. Okay. पहले हम पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर उसका मैक्सिमा निकालेंगे। Question simple है, but the terminology is the data given is little complex format. क्या बोल रहा है ये? एक ऊपर है, नीचे है। This is also A, this is also A. हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे अगर निकालते हैं पोटेंशियल तो Vx V at a distance of x, it will be kq by root x square plus a square for the first charge, and same will be for the second charge. So we'll multiply with 2. अब लेकिन ये कुछ और बोल रहा है, इसको हमने प्लॉट किया है kq by a, क्योंकि q by a कॉमन कर लोगे तो बचेगा 2 divided by root of x square by a square plus 1. So Vx divided by kq by a. This is on the y-axis. This is on y-axis. और इसको हम प्लॉट कर रहे हैं with respect to root of x by a. Sorry, with the x by a on the x-axis. So if we plot this graph, this is y is equal to 2 divided by root x square plus 1. Right? Y is equal to 2. This whole quantity is written on the y-axis. X by a is given on the x-axis. So y is equal to 2 root x square plus 1. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? तो कॉमन सेंस ही आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? जहाँ पर डिनोमिनेटर मिनिमम और स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0 पे। So it is equal to 0, it has a minimum value. Right? Okay. Question number 25. Next, question number 25. For a hollow spherical shell, potential at all interior points is same as potential on the surface of the shell. Now consider three concentric shell of radii ABC and with charge density sigma minus sigma and plus sigma. Potential on the surface of shell. This is question number 25. So yes.
These are three concentric shells. Suppose question number 25, it says the A is the innermost radius, A, B, and C. For a hollow circle shell, potential at all inner point is same as potential on the surface of shell. Now consider three concentric shell ABC, radii ABC with surface charge as sigma minus sigma. So सबसे अंदर वाले sigma है, then minus sigma, then again sigma. Charges will be different. Charges will be charge density into area. So charges are Q1, Q2, and Q3. Q2 will be negative. Here Q1 will become sigma into 4 pi A square. Q2 will be sigma into 4 pi B square. And Q3 will be equal to sigma into 4 pi C square. So potential at the surface of shell A is the innermost. Potential at the surface of A will be K Q1 by A minus K Q2 by B plus K Q3 by C. क्योंकि सब पे अंदर के किसी पे पॉइंट में पोटेंशियल सेम एज पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस. So this answer will come out finally C. You substitute this value, 25 answer will come out C. You can solve Q1, Q2, Q3 and find it. 26 potential on the surface of B, potential on the surface of C. ये हम कर चुके हैं. Similar question. 26 का आंसर आएगा D और 27 का आंसर आएगा C. This question we had already done. 28, 29 का मैं आंसर बता देता हूँ. नेक्स्ट क्लास में we'll discuss. और इसके साथ जो दो और मिले थे, this was 8, 9 and 10. Both BPPs you have to finish. And only and only doubts I will discuss. Sunday को आपका एक subjective test है for the first chapter. 28 is B, 29 is B, and 30 is B. All these questions we have done in the questions in class. So संडे को कितने बजे? संडे को टाइम तो वैसे 12:30 है, बट एक इवनिंग में भी स्लॉट रखेंगे 7:30. प्रोबेबली कुछ लोगों का उस टाइम पे क्लास है. 12:30 is the time. One more slot will be provided. Okay then. Thank you. Question? Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर. सर एक छोटा सा डाउट था एक क्वेश्चन में. आवाज कट रही है तुम्हारी. फिर बोलो. सर एक क्वेश्चन में डाउट था छोटा सा. बोलो. एक सेकंड सर. मैं आपको क्वेश्चन भेज दूं? हाँ भेज दो. यस सर. बाकी लोग जाना चाहे जा सकते हैं. सर भेज दिया. तो इसमें भी है. जीपीपी नंबर 7 में है वैसे. For 2 point sine wave electric field, delta W is work done taking test charge from A to B. Delta U is UB minus UA. Change in potential energy of test charge replacement from A to B. Delta V is UB to put the move on path AB to B. Differential displacement. Which of the following option is correct? VB minus VA is A dot ds. VB minus VA electric field direction में जा रहे हैं तो minus आना चाहिए. So that is wrong. A is incorrect. यस सर. Delta V is minus delta U by Q dash. So because delta V is delta U by Q dash.
बी करेक्ट हो गया, सिंगल चॉइस है मल्टीपल चॉइस है? सर सिंगल चॉइस है सर, बी क्यों गलत है इसमें एक बार? कौन सा? सर बी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। नहीं तो उसमें माइनस क्यू डैश क्यों आएगा? द टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। सर नीचे क्यू नॉट है तो शायद जो चार्ज लिया हो इन्होंने मतलब जो पॉइंट चार्ज लिया हो वो नेगेटिव कंसीडर किया हो। नहीं नहीं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। द वर्ड टेस्ट चार्ज इज यूज्ड ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज। सर फर्स्ट भी तो सही हो सकता है ना, डेल्टा भी फाइनल माइनस इनिशियल इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फॉर यूनिफॉर्म